guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today I have something really interesting planned for the entire day, and I thought to take you guys along. So it's currently 9:15 a.m. and I woke up at around 8:45. I'll be having my tea right now. I'll just get freshen up. अपने cousins को उठाऊंगी. Uh, then let's see. I'll tell you how the day goes on, and I'll take you guys along with me. So I have my tea with me. I really like to sit here in the balcony and have my tea, just watching outside and just admiring the nature and everything. सुबह मैं बिना चाय के my system can't work. When I did that challenge, uh, eating certain color food for 24 hours, so उस दिन I could not have my tea and पूरे दिन I had headache पूरे दिन because सुबह की चाय is very important for me, and yes, I'll just enjoy my tea and then join you guys. चीकू बेबी उठो. गुड मॉर्निंग. उठो, बाहर जाना है ना अपने को. मैंने बोला था ना आज क्या क्या करना है. बाहर जाना है, लंच पे जाना है, फिर यू नो इट राइट. कम गेट अप. इट्स 10:30. 10:30 हो गए. उठ जा. नहीं 2 मिनट नहीं. ओके फाइन. जीनू 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 बच्चा गेट अप. भाई 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 उठ जा. देख जीनू, यू नो आज अपने को बहुत जगह जाना है राइट. वी हैव हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. आई एम रिकॉर्डिंग यू. आई एम रिकॉर्डिंग यू. गुड मॉर्निंग. उठो चलो. 10:30 बज रहे बेटा. उठ जा. गुड मॉर्निंग. उठ जा. उठ. क्या कुंभकर्ण है यार ये लोग. उठ. थप्पड़ खाएगी क्या. अब उठ जा, बहुत हो गया है. ए नाटक नहीं. वेक अप चीकू. हाँ. Everyone checking in at 11. I have applied the Pantene Open Hair Miracle in my hairs, and I'll be washing it off after 30 to 45 minutes. I really like it to use as a pre-hair treatment, pre-wash hair treatment, because it really smoothens my hair out, and it's really nice. So I'll just show you after I wash my hairs how my hairs look. I'm really sorry about the way it looks right now, but yes. So the plan for now is that I need to do some editing for my upcoming YouTube video, and film भी करना था आज, but I don't think कि हो पाएगा. टाइम नहीं है उतना, क्योंकि at around 1:30ish we are going out for lunch. Then there's something really special I'm getting done today. I'm really hoping it turns out well, and I'm really excited for it. And उसके बाद में शाम को आके भी I may go out with my friends, because it's the last weekend here in Bangalore. And yes, अभी I'll just do a bit of editing, थोड़ा बहुत काम और करूँगी, फिर I'll have my breakfast, and अभी तक breakfast नहीं किया, and I'm kind of hungry now. And उसके बाद में I'll just go take a quick shower. So guys, I just took a shower, and my hair feels really soft today. I did my skincare, just applied moisturizer and sunscreen and a lip balm. Now I'm going to apply this for my hair. It's a hair serum from the Body Shop. It's their grapeseed glossing serum. It's really very nice, and it gives a nice shine to my hair. I just take 4 to 5 pumps of this and apply it in the ends of my hair.
Oh yes, it's currently 1. We were supposed to leave by 1:30, but we are a bit late. We are running a bit late, so we'll be leaving around 2:15ish. Hello everyone. We are now going to Mushma Road in Kormangla, and for lunch. And I really like that place. वहाँ के पराठे are amazing. वहाँ पे I'm going to vlog and show you what all we are ordering, and बस हम तीनों ही जा रहे हैं. पहले डिसाइड किया था कि मम्मी भी जाएगी और अजन भी जाएगा, बट वो लोग घर पे ही है. So yes, 3 of us we are going, and then after that, as I told you in the morning, I'm going to a very special place today, and I'll take you guys along there as well. So yes, see you in the restaurant. Bye bye. They have a huge menu, मतलब इतना कुछ है इनके पास पराठे में. So we have decided to order 1 queen size आलू प्याज पराठा and पिस्ता लच्छी, केसर पिस्ता लस्सी, एंड यस बहुत ही कुछ है यहाँ पे. दे हैव आलू मेथी अनियन पराठा, मिक्स वेज पराठा, पनीर पराठा, बेबी कॉर्न पराठा, पालक गोभी अनियन पराठा, मेथी पराठा, and what not. Oh god. And they come in 3 sizes: queen, king and emperor size. And we have ordered the smallest one, that is the queen size, because हम तीनों मिलके शायद उतना ही ख़त्म कर पाएंगे. Let's see how it goes. ऐसा कुछ और स्टार्टर वगैरह नहीं मिलता है यहाँ पे. आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग समथिंग, बट यहाँ पे मिलता नहीं है. सो येस, आई गेस वी आर गुड विद पराठा एंड लस्सी. Also, I forgot to mention, but I love their sitting arrangement. मतलब यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी ना टेबल्स बनी हुई है, एंड गिद्दे टाइप के लगे हुए हैं छोटे. तो इट्स रियली गिविंग अ वेरी वो होता है ना खटिया, और वो एकदम पूरा गांव टाइप की फीलिंग, गांव टाइप का वाइब्स. इट इज़ रियली नाइस. मेरे को याद है जब व्हेन आई वेंट टू द वाइट फील्ड आउटलेट, इट वाज रियली वो ना वहाँ पे ना खटिया लगी रहती है. खटिया पे दे हैव लाइक दीज स्मॉल टेबल्स इन द खटिया, एंड वैसा सिटिंग है वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट, बट यहाँ का इट्स अ बिट डिफरेंट. सो इवन दिस इज़ वेरी नाइस. Guys, this is how our paratha looks like. It is huge. It is really giant. And this is our glass of lassi. I'll try and let you guys know how it was. Yum and amazing. Hi guys, we are done with our lunch and paratha was amazing. बहुत ज़्यादा टेस्टी था. We are so full now. मतलब थोड़ा सा छोड़ना ही पड़ा था, इतना बड़ा पराठा था वो. एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट मेरे को अभी कहीं और भी जाना है. इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. आई एम गोइंग टू स्किन टैटूज because मैं एक टैटू बनवा रही हूँ. आई एम सो एक्साइटेड. आई होप इट टर्न्स आउट एज आई हैव थॉट इट टू बी. मैं बहुत टाइम से आई हैव बीन मीनिंग टू गेट दैट टैटू डन, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं बैंगलोर आऊँगी तभी मैं करवाऊँगी वो, बिकॉज आई वांट टू गेट इट डन फ्रॉम दैट exactly that place. So yes, I'll take you guys along and record the entire process. Let's go. Guys, I finally got my tattoo. I'm so excited. This is how it looks. I know इतना visible नहीं है, but I've vlogged the entire thing, and अभी इसको बोला है 2 घंटे रखने को, and then after that I can remove it. I'm so happy.
I wanted to get my tattoo since last 1 year now, get the semicolon done, but I wasn't in Bangalore, and now we are heading towards Forum, I guess. I need to shop few things for my mom. It's her birthday on 15th, so I'll shop for her, and yes, I'll see you there. Guys, I just came home and I'm really happy today. I got few things for my mama. I got her a wallet which she needed from her since a long time, and I also got her one kurti. Um, obviously it's a surprise for her. अभी उनको मैंने बताया नहीं है, 15th को बताऊंगी. And yes, I guess there's nothing much left for the day, so I'll just end the vlog here. I hope you guys enjoyed the vlog, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also hit that bell notification so that you get notified every time I post a video. And yes, thank you, bye bye. ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम